Chopra, Rotary Club, to kindly escort our dignitaries. Tamsoma Jyotirgmaya. Okay. Stop it. But मैंने अगले स्पीकर को बुलाना है. नहीं कर सकते भैया, तुम मेरे को यही ऑर्डर में बोलना है. Thank you, sir. Thank you so much. ये all the participants की तरफ से. Thank you, sir. Thank you so much. So I'll request all the dignitaries to please take their position on the dais. Dr. Rahul Mehra, PDG TK Ruby, PDG Jitendra Dhingra, DGE VP Kalta, DGN Arun Mongia ji to please come on the dais. I'll request President Salil Chopra to please welcome our keynote speaker with a token of welcome. Thank you, sir, for joining us. I request immediate past President Sanjay Bhatia to please welcome PDG TK Ruby. Welcome, sir, and thank you for joining in this event. I request past President Amarjeet to please welcome PDG Jitendra Dhingra. I request past President R.K. Luther to please welcome DGE VP Kalta ji. Arun, request past President B.L. Ramsasaria ji to welcome DGN Arun Mongia ji. Thank you, sir, for joining. I would like to invite onto the dais past District Governor Jitendra Dhingra for a welcome address.
Thank you, Dr. Rita. President Salil Chopra ji, past Rotary International President R.K. Sabu ji, Chief Guest of the Day Dr. Rahul Mehra ji, past District Governor T.K. Ruby ji, District Governor elect V.P. Kalta ji, District Governor nominate Arun Mogia ji, all Rotarians and guests, good evening. मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे आज आपने यहाँ बुलाया और 2 मिनट बोलने का मौका दिया और वो भी वेलकम करने का मौका दिया. थैंक यू डॉक्टर रीटा, थैंक यू डॉक्टर संजय. आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3080 फॉर दिस हेल्थ लिटरेसी फॉर हेल्थी फ्यूचर. मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट साहब का, डॉक्टर राहुल मेहरा जी, जो आज यहाँ आए. सर आपका स्वागत है यहाँ पर बहुत बहुत. और साथ में मैं तो सोच रहा था कि साबू साहब आज फिजिकल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन ऑनलाइन हैं. मैं उनका भी ऑनलाइन आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा. अक्सर ये बात वैसे तो टीके रूबी जी बोलते हैं, लेकिन आज मैं बोलूँगा. गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो. तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो. जिस पर्पज़ के लिए आज इकट्ठा हुए हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस. एंड एक बार फिर आप सबका मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Our district governor Ajay Madan could not join us because he's not well. We wish him a speedy recovery and back to health and Rotary service. So we have been joined by past Rotary International President Rajendra K. Sabuji, who has a great experience in health education for school children. So I would request him to say a few words on this occasion. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir, we can hear it. Yes. Okay. I'm very happy that we have here Rahul Mehra. I have known him for a long, long time, and he has been pioneer in this health education center. Not center, but what we are, but the whole project and the whole his commitment. And I am happy that it has been, this seminar has been organized by Rita Kalra, Dr. Doctor बोलता ही नहीं हो कभी उसके बारे में. And so my greetings, and I wish you all the best. And we have all the past governors who are here, and current governor Ajay, and Jitan Dhingra, and I don't know who others are there, but all those who are here, my greetings to all of them. And I know that you will have this a very successful seminar. I wish I could be there physically, but because of my other commitment, I could not. I had to tell Rita that I will come for a few minutes. And once again, I will have the opportunity to get to Rahul during his stay in Chandigarh, and I'm looking at day after tomorrow afternoon in this side. So I wish you all the best, and a great. This club itself, Midtown, is remarkable, and this once again greetings to our president right now, and all those who are these who are the leaders of this Midtown.
Salil is there. I think I suppose. God bless and wish you a very once again my greetings and the success of this evening and for the project that you are taking up. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your kind words. We seek your guidance and support to take this program forward to help the community in developing a health-seeking behavior in times to come. And moving forward, it's time to hear to our keynote speaker, Dr. Rahul Mehra. So I would like to invite DGN Arun Mongia ji to kindly introduce our speaker. Good evening, everyone. Friends, it's my immense pleasure and I feel elated to introduce our keynote speaker, a very reputed personality, well-learned, and a person par excellence. We are fortunate as he is here with us today. He was born in national capital of Delhi, now based at Cannon City, Colorado, USA. He did his bachelor's degree in engineering from IIT Kharagpur and thereafter had PhD in biomedical engineering from New York, USA in 1975. He has over 3 decades of experience as a research scientist in the medical industry and academia. He was granted over 75 patents and has authored over 90 manuscripts and 24 book chapters. When he was responsible for market development of medical devices in India, he realized that most effective manner to improve nation is to prevent diseases by educating its youth about healthy lifestyle habits. He dedicated himself to selfless service to fulfill his mission. He did not stop even after his retirement in 2009. He initiated and started an NGO in 2016, Tarang Health Alliance, and he is the executive chairman of that. It's a non-profit promoted with the mission to develop innovative content and train teachers to implement the Tarang Health Alliance curriculum, covering physical, mental, and social well-being in schools countrywide. Tarang Health Alliance is empowered by CSR funding and a grant from the Rotary Foundation. He has also been appointed as representative of India to UNESCO, Chair for Global Health and Education, which provides and share knowledge to improve the health of children and youth worldwide. Friends, what a remarkable journey this person has, amazing achievements. It's a great honor to have him here today as keynote speaker. I, on behalf of all gathered here, feel joy in welcoming and presenting Dr. Rahul Mehra. Sir, please. Thank you, Arunji, for those very kind words. But before we have the keynote speaker, we have nahi, sir. We'll have the. Okay. Okay. ठीक है. So I request Dr. Rahul Mehra to please come.
तो इनका पीपीटी यहाँ कैसे है? अच्छा, इनको लैपटॉप चाहिए। Okay, thank you for the very warm welcome. I really appreciate it. And it's an honor to be in this society here. And thanks to Raja Sabu, I've had the opportunity also of meeting him many times. And we have worked together a little bit over the years. And also, I have a huge thanks to Dr. Kalra, and I can tell you, if it wasn't for Dr. Kalra, I would not be standing here today. And I'll tell you exactly why. It is a long story. We both belong to the same club. It's a group, actually, HURAG. You know, there are different RAG groups within Rotary. HURAG stands from Health, Education, Wellness Rotary Action Group. And she and I belong to the same group. And somehow we got connected through that. But anyway, that's a long story. So my passion is about health. I have worked in health all my life. As a medical research scientist, I worked in health. And after I retired, this is exactly what I want to do for the rest of my life. So it is a long journey. Okay, so just give you, I don't want to bore you. Being a scientist, we love numbers. ये प्रॉब्लम होती है साइंटिस्ट की, उनको नंबर बहुत अच्छे लगते हैं. हम आपको बोर नहीं करना चाहते ज्यादा, but I'll just share one slide. ये just to give you a perspective of what are the deaths among children 5 to 14 years of age. ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं. This is not the latest data, but that's the only data I could find, 2015. Not much has changed. So if you look here, and I'm comparing it to US. Now, US is not a model of health. It is definitely better than Indian health. In that year, there were about 29 deaths in the United States, children dying of diarrhea and other infectious diseases. In India, there were 66,000 deaths. इस age group में HIV 18 अमेरिका में थे, करीबन 6,000 भारत में थे, and so on. ये देखिए टोटल है 300 डेथ्स अमेरिका में थे और 75,000 इंडिया में थे. और आप लोग कहेंगे कि भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. वो बात नहीं है. अगर हम पॉपुलेशन को भी कॉम्पेंसेट कर देते हैं ना, रेशियो ऑफ द यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया वर्सेस यूएसए इज 1 to 5.6. अगर उसको भी अगर हम करते हैं तब भी बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. 45 times higher death rate even after you account for the population difference. 45 times हमारे बच्चे मर रहे हैं. क्यों मर रहे हैं? Of course, it's related to health. ये cause यही है. This is data from Institute of Health Metrics and Evaluation. This is data from India of children 5 to 14 years of age. इसको सबसे main factor होता है malnutrition. Malnutrition means कम खाना या ज्यादा खाना, खराब खाना, malnutrition. Of course, we know a lot of children in our country are underfed, but believe it or not, as you well know, when you go to some of the more urban areas, obesity is also becoming a problem. The well-to-do families, the children are getting more and more obese. They're not, they eat a lot. They eat a lot of junk foods and don't exercise. So that's the main factor. दूसरा है wash. Water
sanitation and hygiene. You know all this. Wash, Rotary, आप बहुत काम करते हो भारत में. Wash is a big factor. Third is air pollution. मैं दिल्ली से आया हूँ. मैं परसों आया था दिल्ली में. मेरी अभी तो voice better हो गई है. You would not have enjoyed listening to me yesterday. मैं दिल्ली में मास्क डालता हूँ, but the AQI level in Delhi was 400. Of course, I'm blessed to be in this area. यहाँ AQI is close to normal. 100 है करीबन. So air pollution kills people. It kills children. It kills adults. Anyway, without going into a lot of data. And then we have environmental factors, maltreatment, etc. I don't want to go into all the details, but I want to give you an idea ये क्यों हो रहा है. And it's related to nutrition, mental and social health, exercise and nutrition, etc. So हम क्या करते हैं? So I formed this NGO called Tarang Health Alliance. हम क्या करते हैं? हम स्कूलों में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपको शौक है आपको अपने बच्चों को हेल्थ पढ़ाना? सब कहते हैं हाँ जी शौक क्यों नहीं है. पहला क्वेश्चन होता है कितने पैसे लगेंगे. प्रिंसिपल और क्या पूछेगा? मैं कहता है 1 पैसा नहीं लगेगा. फिर कहते अच्छा 1 पैसा नहीं लगेगा, कुछ गड़बड़ होगी. फिर कहते कितनी हेल्थ पढ़ानी है? मैंने कहा साल में 40 घंटे पढ़ानी है, विच मीन्स हफ्ते में 2 पीरियड होने चाहिए. एक पीरियड टिपिकली 40 मिनट का होता है, तो 1.5 घंटा हफ्ते में पढ़ाना है. वो मुश्किल आसान से ये थोड़ा मुश्किल का काम है, पर मान जाते हैं, कहते पढ़ा देंगे. फिर कहते किताबें कहाँ आएंगी? मैं कहता मैं किताबें दूंगा. आई हैव रिटन द बुक्स ऑन हेल्थ. यू स्टार्टेड विद क्लास 6 and 7. मेरे पास हैं, किसी को शौक है मैं दिखा सकता हूँ. इंग्लिश में लिखी थी, हिंदी में ट्रांसलेट हो गई हैं 6 and 7 की. अब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम क्लास 1 to 5, 8 to 12. ये पूरा करिकुलम होना चाहिए जैसे आपका साइंस का होता है, जैसे मैथ का होता है. हेल्थ फर्क नहीं है, यही फर्क है. एक चीज में फर्क है हेल्थ में. lot of science and math is knowledge. भाई आपको quadratic equation solve करनी आती ही नहीं आती? आती है जब सीख गए हो. Health is not about knowledge. आप कैसे behave कर रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो. मैं सिखा तो किसी को सकता हूँ, पर वो अच्छा बच्चा खाना नहीं खाएगा तो क्या फायदा हुआ? So this is about behavior, and I think Dr. Kalra mentioned that before. So second thing is we emphasize कि भी बच्चों को एक दिन में 1 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज मतलब जो भी करे शौक से करो. स्पोर्ट्स खेलनी है स्पोर्ट्स खेलो, बाइसिकल चलानी है बाइसिकल चलो, जो भी है ये हम प्रोग्राम में करते हैं. और ये चीज आपको अजीब सी लगेगी. हम कहते हैं कि हमने पेरेंट्स से बात करनी है. वो कहते हैं आपने पेरेंट्स से क्यों बात करनी है? ये तो बहुत मुश्किल की बात है. आपने हमारे बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी है? मैंने कहा हाँ बात करनी है, 1 घंटा 1 महीने में. कहते क्यों? मैंने कहा घर खाना कौन बनाता है घर में? मैं सब बता दूंगा बच्चों को कि भाई ये खाना चाहिए. अगर मम्मी को जो खाना घर में उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा घर में. सो आई टॉक टू द पेरेंट्स. मैं एंड माय एम्प्लॉइज वी हैव जूम कॉल्स. हम पेरेंट्स से बात करते हैं महीने में 1 घंटे के लिए. ये आसान का काम नहीं है पर हो जाता है. And then we obviously want teachers as role models. बच्चे देखते हैं especially during physical classes, ये teachers they are role models. They look upon their teachers. Then we make sure there are health services. किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए कुछ हो कि भाई स्कूल में कुछ होने चाहिए. न्यूट्रिशनल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए. ये ना हो कि खाली कोका कोला मिल रहा है कैंटीन में और कुछ नहीं मिल रहा है, बस वही बर्गर और कोका कोला. ये हम देखते हैं, हम अलाउड नहीं करते हैं. और हम
we make sure कि भाई स्कूल में काउंसलर है. So this is what we call a comprehensive program. It's not just about health education. It has to be complemented by all these things. So anyway, this is our vision. Indian youth be healthy so that each one of them can realize their full potential. Every child can do wonderful things if they remain healthy, mentally, socially, and physically healthy. And what do? We develop materials. We hold their hands, we give them the curriculum, wo hum karte hain. So as I said, we develop the books, we train the teachers, which is a very important one. हम हर स्कूल में 8 घंटा ट्रेन करते हैं टीचरों को. जब तक कम से कम 8 घंटा ट्रेनिंग चाहिए, कम से कम. हम सपोर्ट करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं based on health, behavior, and knowledge. No cost to the schools. Dr. Kalra ne, or I'm sorry, it was mentioned before, I have CSR funding. So that is why we can pay for all these things without any difficulty. And then the most importantly, we want policy to change, advocacy. In fact, I was in Delhi, I met with the head of CBSE, the academic dean, Dr. Manuel. 2 घंटे की बात हुई. कहते हैं हेल्थ जरूर पढ़ाना है. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. पर मैंने कहा देखिए, the same way you treat science, math, language, उसी लेवल में हेल्थ को सब्जेक्ट बनना है. ये नहीं है कि भाई एक चैप्टर साइंस में डाल देंगे, एक चैप्टर, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. It has to be a separate topic. It has to be on the same level as science, language, math. We don't want a stepchild here. We want a full respect to the topic. देखो भारत की क्या बुरी हालत है, मैं क्या बताऊं आपको हेल्थ में. Not only during the pandemic, उससे पहले भी देखिए क्या बुरी हालत थी. वो थोड़ा कहता है ये तो लंबी गाड़ी है. मैंने कहा मैं भी बैठा हूँ 10 साल से बैठूंगा आपके साथ, सीबीएसई के साथ बैठूंगा. वो कहती है आप एनसीईआरटी के हेड को मिलाइए. मैंने कहा मैं उनको जानता नहीं हूँ, आप मुझे इंट्रोड्यूस कर दीजिए. सो आई एम मीटिंग विद द हेड ऑफ एनसीईआरटी. वो किताबें वही लिखते हैं, एनसीईआरटी लिखती है. सो माय पॉइंट इज पॉलिसी हैज टू चेंज. जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी, स्कूल प्रिंसिपल कहता है जी 40 घंटे बहुत है, मैं कहाँ से निकालूंगा 40 घंटे. ऊपर से जब तक डायरेक्टिव नहीं आएगा हम इतना नहीं निकाल सकते हैं. कई स्कूलों को शौक होता है, वो निकाल लेते हैं, पर सब स्कूल नहीं निकाल सकते. सो हमने देखिए फिर पेंडेमिक आ गया. एंड आई डोंट वांट टू गिव यू ऑल द डिटेल्स. हमने एक स्कूल में काम किया था ड्यूरिंग द पेंडेमिक. सब स्कूलों ने कहा हम नहीं काम कर सकते. हमारे गरीब बच्चे हैं, उनके पास कोई ना तो सेल फोन्स हैं ना कंप्यूटर्स हैं, हम क्या काम करेंगे. सो हमने एक स्कूल में काम किया दिल्ली में, आपको पता नहीं होगा, ब्लूबेल्स नाम है. इट्स अपर स्केल प्राइवेट स्कूल. ऑफ कोर्स दीज आर वेल ऑफ चिल्ड्रन, वेल ऑफ पेरेंट्स, दे कैन ऑल अफोर्ड कंप्यूटर्स. तो हमने, एंड आई एम अ साइंटिस्ट, विदाउट डेटा मैं कुछ नहीं करता हूँ. जब तक मेरे पास डेटा नहीं होता तो मैं अपने आप को कन्विंस नहीं होता हूँ कि ये इससे कुछ फायदा हो रहा है. दिस इज द डेटा ऑन बिहेवियर, नॉट ऑन नॉलेज. कंट्रोल हम हर do I need that? Oh, okay. When I'm going there, I'm sorry. Yes, yeah. I'm sorry about that. So this is a control school. Control school का ये मतलब होता है जब हम एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक स्कूल में हम नहीं पढ़ा रहे, और डेटा वहां से कलेक्ट कर रहे हैं. अब देखिए ये उनका बिहेवियर स्कोर, डोंट वांट टू बोर यू विद द डिटेल, बहुत फर्क पड़ा है जहां हमने पढ़ाया है. टीचरों ने पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया. हम अपने टीचर नहीं भेजते हैं. और कंट्रोल फर्क नहीं पड़ा. ये स्टैटिस्टिकल है, मैं आपको क्या बोर करूं, p values and all this stuff.
और ये नॉलेज का स्कोर है, ये है जहां हमने पढ़ाया, ये जहां हमने नहीं पढ़ाया। ये देखिए जहां हमने नहीं भी पढ़ाया थोड़ी इंप्रूवमेंट हो गई है। आप कहो क्यों इंप्रूवमेंट हुई है, मुझे नहीं पता क्यों हुई है। पेंडेमिक में बच्चे घर बैठे थे, या मम्मी डैडी बात करती थी, या पेपर में पढ़ते थे, या टीवी देखते थे, पर मेन पॉइंट है ये फर्क होना चाहिए। अगर ये फर्क नहीं है तो हमने कुछ नहीं किया है। ये फर्क बहुत है, काफी फर्क है। सो बेस्ड ऑन दैट वी आर वर्किंग विद, दिस इज 2020, अब हम इस साल में आ गए हैं। हम दिल्ली में 4 स्कूलों में काम कर रहे हैं। मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड मॉडर्न स्कूल, these are still upper middle class schools, private schools. Modern school, Vasant Vihar, Bal Bharti School, and there is Swami Nagar Model School, 4 school hai. And thanks to Dr. Kalra, we decided to work in 2 schools in Chandigarh. One is a private school, you may have heard, Gurukul Global, suna hoga aapne. अच्छा स्कूल है, इट्स अ गुड स्कूल। वहां हम काम कर रहे हैं, अपना करिकुलम वही, मेथड वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक हम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल है सकेतरी, करीबन 850। ये भी पायलट अभी शुरू हुआ है, ये गाड़ी तो बहुत लंबी करनी है। ये हर स्कूल, हर कंट्री में, हर स्कूल में करना है। ये 10 साल का काम है, कम से कम 10 या 15 साल का काम है। सो थैंक्स टू अगेन टू डॉक्टर कालरा, उन्होंने कहा हम आपको 8 या 10 स्कूल और दे देंगे पंजाब और हरियाणा में, इस एरिया में। And we hired Dr. Swani, she's sitting there. She is an employee of Tarang, of our NGO, and she'll be working with these schools now and next year. She resides in the Chandigarh area. हमें चाहिए कि भाई कौन सपोर्ट करेगा, अगर जरूरत होगी एक और किसी को हायर कर देंगे। So this is my last slide. हम क्या कर सकते हैं? Help connect us with schools who are willing to conduct such a program. ये पैसे की बात नहीं है, शौक की बात है। अगर प्रिंसिपल कहेगा कि भाई ऊपर से डायरेक्टिव आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, भाई डायरेक्टिव नहीं आया है, हम क्या करें? अगर आपको शौक है, आप 40 घंटे निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, मैंने देखा है। Health change, health education policy, help it. आपके बच्चे, you probably all your children are grown up now, most of you I think. आपके grandchildren हैं, आप उनके स्कूलों में पूछिए हेल्थ कोई पढ़ाता है? There are नहीं health education in your grandchildren schools. कहीं नहीं, कोई नहीं होता, मुझे किया है, कहीं नहीं होती हेल्थ एजुकेशन। तो वो उनके प्रिंसिपल से पूछिए कि आप क्यों नहीं हेल्थ पढ़ाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो प्रेशर डालिए प्रिंसिपल को कि भाई वो ऊपर से बात करे कि हेल्थ को कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाए। दिस आई नो, हेल्प बिल्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक रोटरी हैज डन अ लॉट इन दैट एरिया। वॉश स्टेशंस, हैंड वॉशिंग स्टेशंस, बहुत काम आपने किए हैं और कर भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर देखिए खाली इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं होता है। अगर मैं हैंड वॉशिंग स्टेशन डाल एक स्कूल में और बच्चों को पूछ, हाथ धोते हो सोप के साथ? हाँ जी, मैं कहता हूँ दिखाइए कैसे हाथ धोते हो। बच्चों को नहीं पता कैसे हाथ ठीक से धोना चाहिए, उसका भी तरीका होता है, वो हम सिखाते हैं। So infrastructure and behavior are both required. And as medical professionals, which I know you are, some of you in the audience are, provide health checkups, वो आप help कर सकते हो। And be a role model to your children. बच्चे क्या, वो जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ the most important thing you can do is, जब बच्चे आपको देख
हैं? मम्मी डैडी एक्सरसाइज कभी करते हैं? अगर आप नहीं करोगे तो बच्चे क्या करेंगे? Most of you, I think, grandparents by now, but to model their children, and that's how children learn. Okay, so anyway, with that, I think this is the end of my presentation. Thank you for listening to me. And if there are any questions, I'll be happy to answer, but I think you should go first. नहीं कोई question है तो I'm happy to answer. कोई question हो? हाँ जी बोलिए. हाँ जी. I am president of Rotary Classic Chandigarh Club, and we are running a project as health literacy and health future. And my heading is social upliftment through health education. I think if we take the meaning of these two sentences, they are the same. They are the same, absolutely. Social upliftment through health education. बिल्कुल. So in that, we go to the schools to take lectures on the PPT PowerPoint presentation, and to the social gatherings, to the clubs, different clubs, and different organizations. We contact them and go and give the lectures, basic lectures. So I'm highly impressed and really learned a lot from your lecture. Thank you. And will try to modify my system also, and maybe we work together, and with Dr. Kalra and Dr. Rahul Mehra. Thank you very much. Thank you. No, I'd love to work with you as I indicated. जो हमारा curriculum है, and I just brought one copy of the books. Not that you need to. दिखा देता हूँ किसी को शौक हो तो देखिए. Yeah, Some pamphlets, if I don't have any brochures. This is the book of the. So I'll just tell you chapters क्या है, मैंने क्या लिखा है. What does it mean to be healthy? First chapter. Why is it important to be healthy? बच्चा कहता है मुझे क्यों हेल्थ अच्छी चाहिए, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो? जब पूछेगा ना, मुझे पता है साइंस की पढ़नी है, मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है. Different types of diseases. This has to be age appropriate. What affects your health? Goal setting. आपका गोल क्या है? गोल चेंज होता रहता है. आपको पता है जब बच्चा 5 साल का होगा उसने बस बनना है पायलट बनना है. जब 8 साल का है उसने डॉक्टर बनना है. 10 साल का है लॉयर बनना है. तो नॉर्मल है. Decision making, फिर nutrition, hygiene, sanitation, physical activity, tobacco. We all know the role of tobacco. Alcohol and drugs. वो क्यों खराब है? Air pollution, big problem in India. Body changes and reproductive health. ये बड़ा delicate topic है. आपको पता है इंडिया में अगर ऐसी बात करोगे like menstruation की बात करोगे तो टीचर कहेंगे ये हमारे लड़कों को क्यों सिखा रहे हो? ये देखो हमारा माइंडसेट है. लड़कों को भी सिखाना पड़ता है. क्या होता क्या है? Auditory, vision and dental health, injuries, yoga. योगा क्यों करें हम? मेडिटेशन, हम मेडिटेशन क्यों करें? क्या फायदा है? ये सिखाना पड़ेगा. सेल्फ एस्टीम एंड वैल्यूज, इमोशंस एंड स्ट्रेस, कम्युनिकेशंस, कैसे प्यार से बात करते हैं, relationships, how to have a healthy relationship, and violence, how to avoid violence. So these are the different topics. So and this is the teacher's manual. ये वही चीज वही है, ये टीचर के लिए है और ये बच्चों के लिए. ये हम हर बच्चों को एक देते हैं. हाँ जी. नो देखो मैं पेमेंट नहीं लेता हूँ क्योंकि CSR देती है.
बात कर लेंगे बाद हाँ में जी। हाँ क्या इसका कैसे कुछ MOU that we गवर्नर can के साथ define, साइन करेंगे। but the point is it has to be part of the curriculum. मैं वैसे किताब नहीं देता हूँ जब तक स्कूल नहीं मानता है कि भाई हम पूरा काम करेंगे, तब हम देने के लिए। ये हिंदी में भी है बाय द वे, ये खाली इंग्लिश में नहीं है, सब ट्रांसलेट हो गए हैं। So we'll request मैं हंस इसलिए रहा हूं कि भाई हमारा ब्रेन इस एज में सेट हो गया है, आपको चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैं सच कहता हूँ, आपकी वाइफ भी कहती होगी आपको चेंज नहीं हो सकते। मेरी भी वाइफ कहती है आपके बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए हम बच्चों से काम कर रहे हैं। उनका ब्रेन अभी फ्रेश है, अभी मैलेबल है, इससे मैलेबल। हाँ जी, हाँ पढ़ के पढ़ा सकते sir, हैं। we can organize some training of trainers for Yes. Rotarians. Yes, yes, yes. We can organize training of trainers for Yes, Rotarians. yes, absolutely. We can organize training of trainers. बिल्कुल बात ठीक है आपकी। नहीं नहीं, no, that's the word. Okay, मैं So, गलत समझ गया आपकी बात। ये मैं तो समझ- ट्रेलर है, we'll have a detailed, it's a 8-hour program. We'll 8-hour request teacher him to do it specially for us. So this was just a sensitization to help you understand that how health literacy is important to be a part of school education. The government is not taking it up for the UGC to prescribe. देखिए, I'll tell you, I wanted to talk to Modi, but उनसे मिलना मुश्किल है। आप जानते हैं उनको, तो मिला दीजिए मेरे को। हाँ, तो मेरा मतलब यही कहने का है, अगर आप NEP 2020 पढ़ो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें लिखा है कि भाई हेल्थ होनी चाहिए, पर देखो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में भारत में कितना फर्क होता है। पॉलिसी तो दिख जाती है, इम्प्लीमेंट करने में हम 10 साल वेट नहीं कर सकते। But Rotary can be a good platform. Yes. With the exposure Rotary has in the schools, colleges. Hmm. And So this can be a that model is what we are looking as partnership. वो सारा So if you have a orientation program like Dr. Rita says, Yes. all those clubs who are willing to participate and contribute. ठीक है। Because every club has got introduction into schools and Yes. universities already. Yes. So it becomes a very fast. Oh no. So I we think that's have the point. our Rotary leaders discussing about this in the next. We can talk it over dinner. sometime. Right, we can. But So हाँ जी। About 4 years back, our club, Chandigarh, Yes. tied up with the UT administration and with an MOU for setting up a health education center. अच्छा। Where the children can come, and it's about $260,000 project. वो मुझे पता है, वो उसका पता है मेरे को। मैकमिलन, मुझे सब पता है। मैं We are trying to build similar kind of a curricula for the students who can visit there and so that's another aspect that's we are trying, but definitely as is rightly said, every club has got access to a school. Many of the school principals and directors are members. Yes. And we can always start with them. Yes. So it can be both ways. Like he said, there can be a Rotary outreach center plus we can reach. Yes, fine. Up mic, follow mic. Yeah, that is the Health Education Center project. Ruby, I think you're aware of. We have AP Singh also here. And he's the one who is the coordinator for this project. And he can briefly tell you as to what exactly this project is, which is worth about $260,000. Some of it has already been committed, and the Rotary Club Chandigarh is raising funds for that. And we are also approaching the corporate for the CSR funds.
And that is the basic thing, is to make people understand, the children understand as to what is the importance of health education. And there are different models which are there, which will be imported from US and deployed there. And I believe that working with you could be very helpful in introducing this curricula in our schools here. And maybe then the other states or the center can also look at as a model to go forward. AP, you would like to make a mention? Well, and Dr. Mehra knows about it, as you've just mentioned. You've spoken with Mr. Sabu. This is going to be the first of its kind, and the training modules are being designed for Indian students by Macmillan, and we are receiving the training modules for them from there. And we're going to have interactive models and various exhibits, and they are going to be for various age groups, like from class 1 till class 12, and on all health topics, the ones you mentioned and maybe some more. And I think it's going to be a very good project, and basically educate children about some bit of health, as you said, which is not in the curriculum or part of the regular education in schools. Although the basis on which we are training, preparing the training modules are the CBSE curriculum. And I also wanted to know, I remember that you had held a training session for school teachers in Chandigarh with School of Public Health, PGI. I was part of your training faculty. I took one of the sessions. So what happened to that effort? Did anything positive come out of it? Did the government agree? The administration agree? That project did not move forward. The short answer is, वो project आगे नहीं बढ़ा. PGI के साथ जो काम कर रहे थे, हमारा MOU था with PGI, वो खराब हो गया. Violation हो गई, उनकी violations हो गई, उनकी तरफ से. तो हमें choice ही नहीं मिली, हमने बंद करना पड़ा. तो हमने बंद करा था, उन्होंने बंद नहीं किया कि उनकी वायलेशंस हो गई थी MOU पे. हमने कहा हम MOU वायलेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. आज ही in fact Dr. Kalra and I met with the Sir, we can talk about this later because it is still in fluid stage. It will take some 6 months to get a part of the. ये हम लोगों का time है, but ज़्यादा भी लग सकता है सरकार में. But the structure which is already there, it can be taken up. This is by Tarang Alliance, और ये अभी हमारे को अपने voluntary efforts से कर सकते हैं. But actually जो government का proper channel है, that will take some time. But agar we are passionate about this, ki this can definitely change the life of children and their health in future, especially when non-communicable diseases have become a pandemic in India. Diabetes, hypertension, renal failure, stroke, and cancer. So this health education literacy will really help in schools. So I would like to thank Dr. Rahul for a wonderful presentation. Thank you. And a small peep. It is just a peep into this window, which is a huge curriculum. So on behalf of Rotary Chandigarh Midtown, we would like to welcome Past President Rotarian MP Gupta ji for joining us. I request Past President Dr. Bora to please welcome him with a planter. Thank you, sir, for joining. Thank you. उधर देखना पड़ेगा. So, District Governor 2017-18, Rotarian TK Ruby is the pioneer in twin areas of focus: basic education and literacy, and disease prevention and treatment, both as professionally as well as in his efforts of service to community through Rotary.
As District Rotary Foundation Chair, all the global grants authorized by him are focused to these four areas only, like happy schools, wash-in schools, building toilets, mobile diagnostic vans for screening and surveillance of diseases, finally, vaccination for cervical cancer. So he has spearheaded the COVID vaccination campaign in Zone 4 India, and I would like to invite him onto the dais to hear about his experiences on health literacy. मुझे डॉक्टर राहुल से पहले बोलना था, मगर मुझे पता नहीं था क्या बोलना है, तो देयर वाज ए ग्लिच और डॉक्टर राहुल मेरे से पहले बोले. तो congratulations, Dr. Rahul, for this wonderful initiative, which is very much required, and congratulations to Dr. Rita for going along and giving a big breakthrough in 3080. Our incoming leaders from District 3080, District Governor-elect with Prakash Kalta, District Governor nominee Arun, my dear friend, past Governor Jitendra, galaxy of Rotarians. डॉक्टर रीटा के लिए मैं सोच रहा था तो मुझे ये दो लाइनें याद आई कि बादल हो तो बरस क्यों नहीं जाते किसी बेआब जमीन पर, बादल हो तो बरस क्यों नहीं जाते किसी बेआब जमीन पर, खुशबू हो तो बिखर क्यों नहीं जाते किसी उदास सरजमी पे, और जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो किस किस को बताओगी कि घर क्यों नहीं जाते. भाई ये क्या क्या करती हैं मुझे नहीं पता. डॉक्टर संजय ये घर आती हैं, एंड डॉक्टर संजय को भी सल्यूट है, बिकॉज शी डू लॉट. She was president with me when we were serving through 17-18 when I was governor, sir, and she was the best president at that time. And wherever you see, चाहे वो पंचकुला में कोई हेल्थ इशू हो, चाहे वो कोरोना है, चाहे अभी डेंगी है, कुछ भी है, और रोटरी में भी हम जहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात करते हैं, एंड नॉट ओनली कि भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं, ये बहुत अच्छे से भी करती हैं. डॉक्टर राहुल, जब मैं गवर्नर बना तो हमें ट्रेनिंग में ये कहा जाता है कि यू हैव टू चूज योर वे. पहले मुझे लगा कि मेरे पास बहुत सारे फंड्स हैं और हम बहुत सारा काम करेंगे और हम हर चीज कर देंगे, मगर जैसे ही मैं घर से निकला तो मुझे लगा इतना इतना ज्यादा सोसाइटी को जरूरत है कि उसके लिए फंडिंग रिसोर्सेज बहुत कम पड़ जाते हैं. तो मुझे लगा कि दो चीजें हैं जहां पे इंसान को जरूरत पड़ती है एक दूसरे की. एक है बचपन. जब बच्चा, आपने 5 से 14 साल की बात की, तो मेरा ख्याल है 5 से 14, 12-14 साल तक के बच्चे को हमारी हेल्प की जरूरत होती है, और उसके बाद 65-70 साल के बाद फिर हमें किसी की जरूरत होती है. उसके बीच वाली उम्र हम हर तरीके से निकाल सकते हैं. उसके लिए हर बंदे के पास अपना फिजिकल, मेंटल, सब चीजों की ताकत होती है. मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचपन, क्योंकि जो बचपन में डीरेल हो जाते हैं वहां से हमारी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जी. जो स्लम्स एरिया में हम काम करने की बात करते हैं, ऑफ कोर्स जो आपने हेल्थ की बात की, दैट इज मोस्ट क्रिटिकल, बट दैट इज द टाइम व्हेन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बिकॉज वहीं पे ड्रग एडिक्ट्स बनते हैं, वहीं पे थीव्स बनते हैं, वहीं पे गैंगस्टर्स बनते हैं, वहीं पे सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज दे हैव एवरी रीजन टू गो हेवाय. एंड सिमिलरली हेल्थ, जो आपने बात की और आपकी जब डिस्कशन टेबल टू टेबल हो रही थी, वो इसकी रियलिटी थी कि आप जिस काम को करने की आपने बीड़ा उठाया है, द वॉ यू हैव टेकन, द सेम थिंग इज हैपनिंग एट डिफरेंट लेवल्स. चंडीगढ़ क्लब और बहुत सारे क्लब्स इसको अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. डॉक्टर रीटा rightly said it is on a fluid stage, or it is a massive requirement. Surely we have to have a patience, but we have to have a properly planned program.
because we go to many times to the high officials, and now मोदी जी, आप कह रहे हैं मोदी जी को मिलना है, मगर अगर आप मोदी जी तक कोई एक पेज में लिखा हुआ मीनिंगफुल मैसेज पहुंचा दें तो वो आपको मिल भी लेंगे। उसके लिए मैं जानता हूं कि भी वो मिल लेते हैं, मगर उसके लिए हमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना होगा कि हमारे पास ये फंडिंग है, हमारे पास, आप सीएम पंजाब को मिलना चाहें तो हम मिला सकते हैं, वहां तक हमारी पहुंच हो गई है, ठीक है। पिछली बार रोटरी के मंच से मैंने बोला था कि शायद 2-3 घंटे में हम रोटरी की तरफ से पहला सीएम पंजाब को देंगे, और वो हमने दे दिया। तो आज मैंने यहां से कह दिया कि अगर आप मोदी जी को मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं, आप कोशिश कीजिए। Congratulations, you are taking up a very vital aspect of child care, and but it is massive. It is massive because हमने स्कूलों में भी काम किया है जी। हम स्कूल्स में कंप्यूटर्स लेके जाते थे, स्टेशनरी लेके जाते थे, बेंचेस लेके जाते थे, मगर यू विल नॉट बिलीव कि कई जगह पे कंप्यूटर्स को मना कर देते हैं प्रिंसिपल, भाई मेरे पास तो रखने की जगह नहीं है, मेरे पास तो इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए पैसे नहीं है। एक जगह हम कंप्यूटर छोड़ आए, 6 महीने बाद रूटीन में जाके पता किया, क्या किया, कहते जी प्रिंटर तो है नहीं, कंप्यूटर दा की करिए। आई एम टेलिंग यू रियल टाइम। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट वेरी इजी टू वर्क विद स्कूल्स, और जो उनके टाइम का है, बिकॉज दे हैव टू वर्क टू देयर परफॉर्मेंस। हमें 2 स्कूल मिल जाएंगे, एमपी सर है हमारे, बहुत एक क्लास स्कूल चंडीगढ़ का, आजकल लोग हमारे पास सिफारिशें लेके आते हैं, पहले एक स्कूल था, अब हमारे पास शहर में 2 स्कूल हो गए जहां की सिफारिशों के लिए लोग हमारे पास आते हैं कि सर वहां पे सिफारिश है। सो यू कैन इन्फ्लुएंस दिस गाय, बट टू हैव द मास इम्पैक्ट ऑफ दिस, ऑफ कोर्स वी हैव टू गो टू द authorities, unless the authorities accept it, and we have to be flexible. Sir, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बट मैं जितना काम करता हूं, अगर हम 40 आवर्स की बात करेंगे, अगर हम यही कहेंगे कि इसको पूरा एक सब्जेक्ट लेके आइए, बिकॉज देर आर सो मेनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो, एंड वी कैन हैव ए सब्जेक्ट। मेरे मन में आ रहा था कि क्या हम इसको 12 घंटे पे लेके आ सकते हैं, क्या हम इसको 8 घंटे पे लेके आ सकते हैं, बिकॉज आज की डिजिटल दुनिया में हमें टाइम को तो कम करना ही पड़ेगा ताकि वो वर्केबल हो। उनके पास ऑफ कोर्स साइंस के साथ, उनके पहले क्या होता था, साइंस एक सब्जेक्ट होता था, अब जाके वो आगे उसके सुपर स्पेशलिटीज आ गई हैं। पहले आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते थे तो यू नीड टू गो टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर के पास जाना है जी। अब आप जाते हो रेटिना स्पेशलिस्ट ये है, डायबिटिक का ये है, इंट्रा का ये है, ठीक है। पहले आप डेंटल सर्जन के पास जाते थे, वो ही एक साहब होते थे। अब डॉक्टर कालरा के क्लिनिक पे चले जाइए, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब कितनी 12 सुपर स्पेशलिटीज हैं, 13 सुपर स्पेशलिटीज हैं जी। सो आप भी एक सुपर स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं सर। So you have to create a full curriculum with a lesser time, and wish you all the best, all the success. Thank you so very much. निक्कू भाई मुझे वहां बैठते बैठते बता देते होते हैं, तो मैं माइक से, भाई आजकल पास्ट गवर्नरों को मौका कहाँ मिलता है बोलने का यार। Thank you so very much. Thank you, sir. And we look forward for your support in implementing this project in District 3080, especially Haryana. And Punjab आपने बता ही दिया, हो जाएगा। So friends, it's time to start something new and trust the magic of beginnings. We all know that children have been out of school. Over 90 million children in India have been out of school for almost 18 months. So we really have to work hard to strengthen this Rotary India literacy mission, whose all efforts have been undone after 7 years. So here's a small video I would like to share with you all.
E-learning facilities in 10,000 schools. When we join hands, miracles happen. ये तो भी टाइम लगेगा आ जाए okay sir. So we all know that so many children have been out of school, but education is one of the most important foundations of a successful, learned and thriving society. It is responsible for social, economical, political growth of the society. When nationwide lockdowns were announced last year, all board exams, nursery school exams, entrance tests, university exams, they were all put on hold. And thus pandemic affected the continuity of learning. Now, as the students are going back to their schools and colleges, Rotary has to make greater efforts so that Rotary has to put in great efforts so that we achieve our goal of total literacy and quality education for all. The Rotary India Literacy Mission with its program Teach, which is it is a very well structured program which includes teacher support, e-learning, adult literacy, child development and happy schools. So in this map, you can see that most so for girls, it is even lesser. So I'm just giving a quick review so that all the current presidents, president-elects, and all those who have been past presidents can take a view and try to implement this program in a big way so that our district 3080 achieves the star celebrity status in the entire country. So under teacher training program, there are beautiful programs launched by Macmillan and Tata Foundation, which are 5-day courses. Basic fee is 300 rupees and they train in critical thinking, creativity and digital literacy. So I would encourage every president to take up schools and get this online training completed so that we can honor them next year with Nation Builder Award. So these are all the collaborations already existing. Even this teacher training program by Dr. Rahul, Tarang Alliance, is registered in Rotary India Literacy Mission. So e-learning is becoming more popular with smart classrooms, and as Rotary has already provided projectors, smart TVs, smart boards, we would encourage presidents and Rotarians to make at least 5 happy schools this year by promoting e-literacy and providing them with all the software and hardware. Adult literacy is like the flagship program for Rotary India Literacy Mission, because unless we improve adult literacy, overall literacy rate will not change. So we are encouraging clubs to provide this basic curriculum to adult illiterates, at least 100 by each club, so that we achieve our goal. So these are various approaches. Vidya, where we partner with large membership, and in 3080, this has happened in with Gayatri Parivar in Dehradun. Similarly, with Brahma Kumaris. And Shiksha is grassroots teaching by the students, especially interactors and rotractors who can adopt. So each one teach one so that we achieve this goal.
And this definitely, adult literacy gives them this feeling of dignity because and respect which they actually deserve in the society. And Saksham Bharat, again a part of adult literacy, this is vocational skilling programs. I know most of the clubs are doing, but we must try and push it further so that we can increase the number of vocational skilling graduates. Most of the courses, as past President R.K. Lutherji was specially mentioning, we have a course in home care nursing, which is general duty attendant, then pharmacy assistant, geriatric assistant, then various courses such as carpenters and computer repair, mobile repair, and other courses. So these 3 months courses can also skill people and make them educated. Child development is a special program by Rotary India Literacy Mission, which we call it Asha Kiran, and you can sponsor one child. You can send one child back to school by paying rupees 2,500. The details are available on Rotary India Literacy Mission. I showed you the video which mentions that child labor should not be encouraged. Instead, they should be going back to school. So you can register for as many children you can adopt, and you can get the details from Rotary India that children you have adopted by just paying 2,500 rupees per child. We did this project in Chandigarh where children from this Ashiana orphanage were adopted by Rotary India. So each one should adopt one. Happy schools, most of you must be taking up. So happy schools include building up a boundary wall, painting the schools, providing blackboards, and as our DG's signature project this year of providing desk and benches to provide education with dignity. I think most of you have joined in and got your benches for the schools selected by you, then providing playgrounds, providing school supports, books. These are all part of happy schools, and they also include providing toilets, drinking water, hand wash stations, and menstrual hygiene facility. So we should go ahead and take, we are already 5 months in this year, and I would request each of you to do this project and come back with a report to MP sir and to me so that we can report it at all India level, the work done by you all. This Padho Bharat initiative by Ratnanidhi Library, I have already circulated the mails. So they provide just totally free books, 100 books which are basically reference reading books for children from 9th to 12th class, and they have been specially recommended by CBSE. They help you prepare for entrance exams, competitive tests and all, and they charge only for, the books are worth thousands of rupees, they charge only for this courier. So I would urge every one of you to go on RILM, register yourself and order your libraries. So this is an initiative taken up by Rotary Club Chandigarh Midtown. We have distributed 14 libraries. Because of lockdown, we didn't get the courier. We received recently, and we have distributed all these libraries to 14 government schools. So this is a very important project recently launched by Rotary India Literacy Mission, which is Vision Spring. In collaboration with them, they want to provide 1 lakh free spectacles. But it is very important that Rotarians join this project to identify children with vision defects, especially myopia. So you have to take a refractionist or an optometrist with you.
ophthalmologist, so that you do a screening test, identify these children, and by logging in on the Google Doc form, you submit all those prescriptions. So within 1 month, the children will get the spectacles. Mostly, if they have any query, they come back to you asking about the child, but 99% the spectacles have fitted well. And I will tell you, 3171 is doing really great. They have 100 clubs have already registered for this program. So in our district, just 3 clubs have registered. We have circulated. I will circulate it again. So you have to just log in, register, do the screening test for children, and then provide them free spectacles. So this is a very good opportunity and we should avail for it. The program, this campaign closes on 31st of December. So I'll request everyone to take this project immediately so that we are able to do it by 30th of November and the children get their spectacles before the new year. So friends, this is about Rotary India Literacy Mission, and we have with us District Governor 2022-23, Rotarian VP Kalta, and he's the driving force to adopt the change by Rotarians of District 3080. I would like to invite him to share his thoughts about this project. Thank you, Dr. Rita Kalra. President Salit Chopra ji, PRIP R.K. Sabu ji, Chief Guest Dr. Rahul Mehra ji, PDG and DRFC P.K. Ruby ji, PDG and District Trainer Designate Jitendra Dhingra ji, DGN Arun Mongia ji, Club Secretary J.S. Baba ji, MC Dr. Rita Kalra ji, District Editor MP Gupta ji, AG Designate and Presidents and President-elects of Tri-City, fellow Rotarians, Rotarians. A very good evening to all. First of all, I would like to congratulate Rotary Club Chandigarh Midtown to organize this successful event, orientation program on health literacy for healthy future. I am grateful to Dr. Rotarian Rahul Mehra ji, UNESCO Chair for Global Health and Education, to be here in person and to enlighten us about the health literacy, in particular to school health education, and guide us how to launch this program as a pilot project in our district 3080. From health, hunger, and literacy as humanity, Rotary International had diversified its core areas into 7 focus areas, all of which somewhere boil down to disease prevention and healthcare. I tell you how. First of all, our first focus area is water, sanitation, and hygiene. We support local solutions to bring clean water, sanitation, and hygiene to more people every day. It means not providing only clean drinking water. It intends to prevent the mankind from waterborne diseases like malaria, typhoid, hepatitis B, cholera, etc. WHO estimates that 80% of diseases worldwide are waterborne diseases. Malaria, maternal and child care. UNESCO estimates that nearly 3 lakh women dies during pregnancy every year, and 33 in 1,000 children below age 5 dies. What wonders can health literacy do? I am telling you a true story in India. एक अरुका वैली है आंध्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर.
उसमें हाईएस्ट जो है सबसे ज्यादा मैटरनल डेथ्स हुआ करती थी आज से 3 साल पहले। तो वो लोग क्या है कि हॉस्पिटल नहीं जाते थे और वहां पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, तो एक एनजीओ ने एक इंटरवीन किया और वहां पे उनको हॉस्पिटल ले जाना शुरू किया और डॉक्टर्स भी वहां पे बीच बीच में पहुंच जाते रहे उनके बीच। तो उस एनजीओ के इनिशिएटिव से आज ये सिचुएशन है कि पिछले 2 सालों के अंदर वहां पे एक भी डेथ रिकॉर्ड नहीं हुई है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ लिटरेसी। बाकी हमारे जैसे इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर भी अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, लोग जो है हॉस्पिटल जाएंगे, अच्छी हेल्थ केयर के अंदर जा सकते हैं। लाइकवाइज बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी भी जो हमारा फोकस एरिया है उसके अंदर भी क्या है कि अभी हमारी लिटरेसी रेट ही 60-65-70% के करीब है। जब लोग पढ़े लिखे ही नहीं है तो उनको मेडिकल लिटरेसी क्या दे पाएंगे? तो हमारा फोकस एरिया बहुत राइट डायरेक्शन में है रोटरी का। देन डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ये तो टोटली इसी के अंदर है, इसके अंदर फोकस है हमारा जो रोटरी का इनिशिएटिव है। देन सपोर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, आपने देखा दिल्ली के अंदर आज मेरे ख्याल से सारे ऑफिसेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन बंद है, तो एनवायरनमेंट के अंदर भी रोटरी काम कर रहा है और कितने काम करने की जरूरत है ये हम सब लोगों ने देखना है। इसके अलावा आवर डिस्ट्रिक्ट इंटेंड्स टू बाय one mobile dental van for each states in our district। CSR के थ्रू ये बात चल रही है। और इसके अलावा जो ब्लड टेस्टिंग वैन भी एक हम हर एक अपने स्टेट के लिए एक खरीदना चाह रहे हैं। 4-5 वैन्स अगर इस तरह की आ जाएगी तो मेरे ख्याल से अपना मेडिकल सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ साथ एजुकेशन भी जो है हम लिटरेसी भी इसके अंदर दे पाएंगे। बाकी वॉश, विंस, टीच, हैप्पी स्कूल्स, ये सब तो चल ही रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और RILM के थ्रू जो भी डॉक्टर साहब बहुत इसमें एडवांस है, हम आपसे इसमें भी आने वाले टाइम में सपोर्ट लेंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल मेहरा जी से मैं और ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हम किस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको एक एज ए पायलट प्रोजेक्ट लें, तो इसके लिए मैं और डिस्कशन और टाइम आपसे चाहूँगा। हम चाहेंगे कि नॉट ओनली हरियाणा और पंजाब में करें, हिमाचल, उत्तरांचल और चंडीगढ़ के अंदर भी इस प्रोग्राम को हम चलाएं। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. We seek your guidance and leadership to take this program forward into the next Rotary year. As we draw curtains to this beautiful evening, I would request President Salil Chopra ji to propose vote of thanks. Thank you, Dr. Rita. Honorable keynote speaker of the evening, Dr. Rahul Mehra, former District Governor of District 3080, Jitinderji Jhingra, former District Governor, current DRFC, our great leader, Ruby sir, Arun Mongia ji, the DG elect, and we have Kalta sir, the DG elect. Friends, 120 मिनट में जो बोला गया उसको 120 सेकंड में थैंक्स करना बहुत मुश्किल है। I heard everybody. A lot of vision is there with you people. You have class, you have to reach the masses, you have so many ideas. And
What impressed me with our worthy keynote speaker, sir, your passion toward the health of children. You've shown us how we are lowered and how we are higher in mortality rate of children. So the concern is very genuine. What you said about pollution, malnutrition, and other factors, I think they're worth notice. Sir, in our club also, we have attended 21 schools to talk to children on pollution, to raise their heads on this environment which has been polluted badly. And much success has been attained when the children present to us how are they going to adopt this way towards the pollution retent. Further, I like, sir, the way you are writing books. You are giving books free. You are motivating principals to make it a chapter or to make it a class for the children. Yes, sir. Children are the nation builders for tomorrow. If you ask me, they are going to hold the weight of the nation. And we have plenty of children, the young folks. If at all we target them, I'm so sure we can achieve what we all have in our minds today. Sir, washing hands you were referring to. So when we reach schools and when we install the hand wash stations, we teach the children through Dr. Rita and through our team how to do 6-step hand wash. And today, I think most of the school children, they know this procedure and they're following it very, very well. Sir, you, Ruby sir, you refer to 5 to 14, the age where the child needs care and the survival. When I visit some doctor, they say from 0 to 6, if the child survives, it's all with the parents. But from 6 to 14, if the child survives, it's because of his education level, it's because of his commitment to, be healthy in this world. So that is what made me, to tell you that this limit will still cross. But if at all we don't act right time, the rate, as you told, sir, will increase further even. So we go to schools, we talk to people, but the skills and other things we are speaking about, I think will take up this thing, sir, and we will give you the schools where we will get a yes and we'll project those names to you, sir. Dr. Rita is talking on the Padho Bharat, Ujjwal Drishti. This has been followed religiously in our club. We are going to schools, we are meeting people, and we are doing this in not only one school, maybe 10 to 12 schools. Tomorrow again, we have an eye camp for the children for watching their eyesight and giving them the free spectacles, So that kind of projects we are undertaking. Water sanitation hygiene, as you said, sir, is again a Rotary function. It's again a Rotary folio that we are going to follow it. I think in each and every place, something somewhere on water this hygiene is happening anywhere. Your story on Andhra really impressed. How they came out, sir. Andhra is not in a progressive state, but Andhra has done that. What people feel. Once you're focused in something, you will certainly do that. Thank you, everyone, for doing that good job, sir, and thank you to the galaxy of people sitting before us, who have given this time, who have understood the fact, and I'm so sure, as I am motivated, all of the presidents here, all the galaxy of Rotarians sitting here, they'll be motivated to take up the task. Thank you, Dr. Rita, the event chair. You have been doing such a nice job always, and with the support of your own doctor, Dr. Sanjay Kalra. And thank you, friends. Thank you, Midtowners, for hosting this. We are grateful to everybody. Thank you very much. So as a customary, because we have a visiting Rotarian from Colorado, USA, we have a flag exchange with Chandigarh Midtown.
नहीं अभी रहना तो बस उसके बाद एक फोटो ले लेंगे. हाँ, आज बीच में आज. Thank you. Thank you. So with this, we close the meeting. Everyone is requested to join for fellowship and dinner. Thank you so much for participating. So we could have a group photograph. I request all participants to come here in the front because we need it for our social media. I request all participants to please come in front and dignitaries to please join in the front. We thank all our participants who joined us on virtual mode also. Sir, आइए सब लोग आ जाते हैं ऊपर. Everyone, sir आइए.